इंटरनेशनल पंचायत, बातें ग्लोबल, दिल देसी। लॉन्गर रन मुझे फील होगा, ये मुझे Yes. पता है अच्छे से। Okay. तो तो उस वही चीज दिमाग में रख के आई टुक अप एंटरप्रेन्योरशिप वाली डिग्री। Okay. So I feel that you are a heavy researcher given the fact that you applied in 3 countries and इतना ज़्यादा research करा 3-4 की ranking compare करना. So I just wanted to know what should one think about before applying for the master's degree? Like, what is the process like? What kind of research that you do? Because, like you said, that your bachelor's is in mass comm, and you moving to the finance or entrepreneurship industry, so it's not related to bachelor's degree as well. So, what kind of research happens? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ because a lot of people are very young, a lot of people don't have experience like you, and इतनी समझ नहीं होती उस एज में. फॉर एग्जांपल इफ यू आर अप्लाइंग लाइक क्लोज टू 27 28, आई फील दैट you know the industry, you know what you need to do. But if you're applying around 21 22, हम बहुत young होते हैं, and sometimes I feel that people just take a very big decision of your life. Just say for example in my field, I will just try to explain from my perspective and then over to you. जैसे एनालिटिक्स जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा वाइडली टॉक्ड अबाउट फील्ड है फॉर दीज डेज. यस एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, राइट? सो एंड यूडब्ल्यू का एक हॉट सेलिंग डिग्री है बिजनेस एनालिटिक्स. बट यस आई फील पीपल विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस इंडस्ट्री इज अबाउट, जस्ट बिकॉज काउंसलर कह रहे हैं अरे पीआर मिल जाता है, ये मिल जाता है, इंडस्ट्री बहुत है, पैसा बहुत है, people just take that big decision. But once they enter into the industry, once they start studying, they realize that it's not for them, because you need या that kind of mindset, right? वो एक creativity चाहिए होती है, critical thinking चाहिए होती है, analytical skill चाहिए, like I said, coding करना पड़ता है. So it's not everyone's cup of tea. You need to enjoy that. लोग कर लेते हैं, but what I feel, अगर आपको कुछ चीज 30 साल तक करनी है, तो मतलब एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है मास्टर्स करने का, क्योंकि यस उसके बाद आप फील्ड नहीं चेंज कर सकते हो. नहीं तो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द प्रोसेस लाइक, बिकॉज यू आर यंग. Just talking to a counselor, is it enough, or you have to network, reach out to people? So just wanted to understand your journey, and what will you advise other people, like how they should approach this before applying for any master's degree? Okay, so let me first start with why I wanted to get into a finance degree. And mind you, before I tell you that, मुझे पता है मेरी पढ़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई है. Yes. You I know need to be that. a lifelong learner. That's what I believe in. You never stop Not learning. just that, I might as well have to get formal education further. Okay, PhD, Uh, doctor, नहीं, we'll doctorate. see how it goes. Okay. We'll see how it goes. But मुझे पता है यहाँ खत्म नहीं हुई है. Mhm. ठीक है. So that is one thing. Why I wanted to get into finance? I मतलब मैंने मास कॉम क्यों किया, that's an entire different story. Let's not even get in there. But the summary is the fact that मुझे पसंद नहीं आई. Okay. I didn't like the industry. Mhm. I've interned under photographers, wedding photographers. वेरी मतलब बहुत जाने माने अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर्स Oh, nice. इंडस्ट्री के, मैंने उनके अंडर काम किया है, इंटर्न किया है. आई वाज लाइक भैया मेरे से ना हो पाई है. वो किक नहीं आया. नहीं आया. मैं चल्लू भाई के फोटोग्राफी टर्म करती में हूँ. किक नहीं आया. हाँ. आई डू इट एज अ मतलब आई डू इट एज अ हॉबी साइड में, बट आई वाज लाइक मैं इसको अगर इफ आई मेक इट माय प्रोफेशन आई विल स्टार्ट हेटिंग इट. Okay. When something becomes a responsibility, you start hating it. तो मेरे साथ वो हो गया. But that's a very mature decision at a very young age. Ki you realized it very early on that, okay, this is not something that I enjoy and I can't do that for the rest of my life. I think some people just get stuck. वो निकल नहीं पाते. So this is very important. Ki I was like, realize that early on. yeah, I know. I was like, if I want to keep doing this in the future, और उतने ही अच्छे से हो मेरे से, उतने ही satisfaction मिले, then I'll have to stop it right here. मैं इसको अपना career नहीं बना सकती. Yes. Because a very important part of choosing your career is the fact कि आपको आप कमाते कितने हो उसमें से. Satisfaction एक चीज है, but finance एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. It is. It is. It is. एंड इंडिया में
you don't even get paid in peanuts, let me tell you. Yeah. In Peanuts भी some नहीं मिलते, industries, बालू I think मिलते it's होंगे. changing, but you are absolutely correct. Yeah. Unless and हाँ, most photographers वो अपना खुद का venture करते हैं, they start their own studios and stuff. But the market is so full, so saturated. I was like, nah. आईफोन के जमाने में तो हर कोई अपना कैमरा लेके चालू हो जाता है फोटोग्राफर बोल के, एंड आई थिंक एआई ने भी बहुत किल कर दिया है, लाइक Absolutely, yeah. absolutely. तो वो गया. तो what I wanted, और 3 साल की पढ़ाई में, you know what I missed the most? Numbers, Oh, calculations, like you mean numeric maths? calculations, Oh, maths. maths. ठीक है. Miss the I'm like, zero. रोज 3 साल में 900 दिन, 1000 दिन के आसपास मैं रोज रोई हूँ. मम्मी मैथ्स नहीं है, मम्मी पापा कैलकुलस नहीं है, पापा ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं करना मुझे, मैं बीच में छोड़ रही. बेटा प्लीज फिनिश कर लो. Just starts, फिनिश दैट, yeah. देन यू डू व्हाटएवर यू लाइक. Yeah. तो मैंने वही किया. तो मैथ्स मुझे कहाँ मिलता, इसमें मिलता. तो दैट वाज वन ऑफ द Finance. थिंग्स, Okay. वन ऑफ द थिंग. हाँ, तो वो फाइनेंस हो सकता था, वो इकोनॉमिक्स हो सकता था, वो अकाउंटिंग हो सकता था. बट देन मैं उसी लाइंस में भी देख रही थी. Mm-hmm. आई वॉज कीन ऑन, मैंने इंडिया में भी देखा आपका NMIMS JBIMS में Yeah. यू हैव Really good university. इंडिया में. यस, बट इंडिया में ओनली 2-3 यूनिवर्सिटीज ऑफर यू मास्टर्स ऑफ फाइनेंस, Mm-hmm. MSc Okay. फाइनेंस जिसको बोलते हैं, Okay. MSc या मास्टर्स ऑफ फाइनेंस जो बोलते Mm. हैं. मोस्टली मास्टर्स ऑफ फाइनेंस US कनाडा में मिलता है, Mm-hmm. यूरोप में मिलता है. ठीक है. तो वो तो गया, मतलब नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप तो गया, Yeah. क्वेश्चन आउट ऑफ द क्वेश्चन. Why? Because देन of the weather? नहीं नहीं नहीं, आई लव ठंड. ठंड मतलब Okay. मेरे से गर्मी नहीं होती है. Because you don't meet the prerequisites, the criteria. That's why. Yeah, that's because Canada तो I missed because I didn't meet the criteria. What मतलब about Europe? 16 years of यूरोप मैंने UK में अप्लाई किया था, Mm-hmm. बट आई डिडंट गो उस टाइम पे बिकॉज आई वाज लाइक अभी थोड़ा उस, मतलब बैक देन उसी टाइम पे उनका थोड़ा शुरू हुआ था, इकोनॉमी वाज नॉट डूइंग वेल Okay. एंड Yeah, I स्टफ लाइक remember. दैट, सो आई Mm. जस्ट चोज नॉट टू. एक और चीज है, यूके में ना बहुत डिग्रीज जो होते हैं वो 1 साल की होती है. A Yeah, lot of yeah. degrees. I think even Canada for that matter. मैं जब रिसर्च कर रहा था कि मेरे को बहुत सारी अच्छा. डिग्री 1 साल 1.5 साल की मिली है, एंड आई हाँ. थिंक एक नोशन सेट है कि 2 साल की तो करनी है. नहीं, बिकॉज थिंक अबाउट इट लाइक दिस. आप 1 साल में आप कंटेंट जो आप कवर कर रहे हो, 2 साल की डिग्री में 2 साल का स्ट्रेच होता है उतना सा कंटेंट कवर करना. यू बेसिक्स पे इन ज्यादा ज्यादा तवज्जो एग्जैक्टली दिया जाता है. बेसिक्स पे ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, वो है. एंड देन 2 साल इज लॉन्ग इनफ टाइम आई फील टू Mm, अंडरस्टैंड. तो अभी आप वो टाइमिंग कट कर रहे हो, यू आर yes, कटिंग योर मतलब कटिंग द स्पैन शॉर्ट बाय, मतलब इतने लंबे में वो भी. 1 साल. Yeah, दैट मीन्स दे आर आइदर स्क्वीजिंग यू, yeah, there is going to be no breathing space. yes, ठीक है. या फिर they're not covering a lot of stuff, meaning they're cutting out on the basics yes, and they'll be teaching all advanced level stuff. makes sense. Yeah, that's a way तो to put it. मुझे वो चीज पसंद नहीं आई. Makes sense. I was like नहीं. Yeah, makes sense. Okay, so that's ठीक है. how this came. But हाँ, I think हाँ. एक चीज रहेगी entrepreneurship कैसे, and I think that you covered, because you always wanted to have your own venture someday. What yes, another thing is मैं जब 2019 में, आई थिंक 20 बिगिनिंग 20 के शुरुआत में, my dad started his own startup. Okay. So I have seen it, मतलब जैसे that is his own child, that is like the his Yeah, papa, my papa startup is like my sibling, yeah, yeah. It is. जिसको मैंने पैदा It होते देखा है. it needs to be, right? हाँ, she is my sibling, whatever she he whatever जो भी Yeah, it. yeah. ठीक है. तो I wouldn't say कि I gained, मतलब I gained valuable experience from it. I wouldn't say कि it's up there yet. But then वो मुझे बढ़ते देखना मुझे बड़ा अच्छा लगा. That was Okay. another reason behind me choosing entrepreneurship. I was like, practically तो ऐसे होता है, लेकिन theoretically कैसे होता है वो थोड़ा देखते हैं, Yeah. you know. So That was I another mean, thing. now when you
put it together, it's just sounds so beautiful, right? In terms of Canada, UK, Australia, UOW एक option में नहीं है, and suddenly you come down to UOW and both the things that you actually wanted, finance Yes, and entrepreneurship, वो दोनों yes, combine होके you're getting a degree, and I think nothing can be yes. better than that. That's the Not beauty at of all. life, right? It comes in circle, It comes in a full circle. and ऐसी डिग्री मतलब ऐसे मतलब I think this really feels that कि तो मेरे लिए बनी है. This is something which, Absolutely. yeah, nice. एंड जैसा तुमने बताया पहले, लोग सोचते नहीं है, लाइक, तो दैट इज द रीजन व्हाई आई वांटेड टू गेट इनटू फाइनेंस. Makes sense. Yes. ठीक है. नाउ लोग क्या करते हैं, हाँ, काउंसलर लोग तो बहुत बोलते हैं, मुझे भी बोला था, डोंट वरी, यू गेट इनटू योर फर्स्ट मास्टर्स, फिर तुम चाहे सप्लाई चेन, बहुत लोग करते हैं, तुम वो करना, Yeah, yeah. चाहे बिजनेस एनालिटिक्स करना, चाहे ये करना वो करना. तो वो वाला चीज थोड़ा पुशी वो होते हैं, बट यू नीड Yes. टू हैव इट इन योर हेड कि हाँ भैया, मेरे को क्या चाहिए इधर से, व्हाई Absolutely. एम आई गोइंग टू दिस कंट्री. Yes. One thing I would like to add here is a very good point that you brought up. Counselor get pushy because उनके पास I don't know उनका क्या एजेंडा होता है. I don't know their industry how they work, but I feel उनका that काम ही वही है. उनका काम है एक टॉप सेलिंग कोर्स को सेल करना. I don't know, they get some kind of push from the university that ये कोर्स हमें हॉट सेलिंग बनाना. I don't know how the industry works is, so I won't comment on that. But counselors जो होते हैं वो pushy होते हैं थोड़े. So what I will highly suggest everyone out there अपने एक्सपीरियंस से कि काउंसलर्स पुशी हैं बट डू योर ओन होमवर्क. इंडस्ट्री को स्टडी करो, चीजों को स्टडी करो, अपना खुद का रिसर्च करो, लोगों से लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, एंड एब्सोल्युटली. देन टेक द डिसीजन. बिकॉज होता क्या है ना, मैंने ये देखा इंडिया में कल्चर यही है, काउंसलर भगवान है, जो बोल दिया जस्ट फॉलो दैट एंड हो जाएगा. वो मेंटालिटी ना मेरे को लगता है बहुत कम लोगों की करियर ओरिएंटेड मेंटालिटी होती है. द मोर मेंटालिटी इज फ्रॉम बाहर जाना है, बस पढ़ना है, रादर देन कि यार करियर के पर्सपेक्टिव से. मैंने बहुत लोग देखे, दे स्टार्ट और दे ऑलवेज थिंकिंग फ्रॉम द पीआर पर्सपेक्टिव कि यार पीआर, ये कोर्स ले लो पीआर मिल जाता है. बट आई फील दैट थिंग्स ऐसे बदलती है, आज कोर्स पीआर लिस्ट में कल नहीं होगा. एक्चुअली. तो प्रेफर एक्चुअली. लाइक गिव योर कोर्स योर प्रायोरिटी. अपनी लाइफ जो तुम आगे करना चाहते हो इसको प्रायोरिटी कर दोगे, मेरे ख्याल से थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग वो एग्जैक्टली. सारी. तो एग्जैक्टली. जस्ट डोंट आई नो इस प्रेशर में मत आओ, उन्हीं को भगवान मत हाँ. मानो. डू योर ओन होमवर्क, डू योर ओन रिसर्च, एंड आई थिंक एक्चुअली. दैट इज हाउ यू शुड अप्रोच थिंग्स. एक सेकंड पॉज कर Yeah, सकते हैं? एक सेकंड, definitely, आई विल बी definitely. बैक. Yeah, no problem. हाँ, तो गुड. बस वही वाला काउंसलर का प्रेशर क्यों डिस्कस कर रहे थे. बट हाँ, आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू वांट अल्टीमेटली. I डेफिनेटली. knew that I wanted to do something with numbers, be it finance, economics, या whatever it is. या मुझे व्हाटएवर. numbers देखने अपने सामने, मेक सेंस. because that is something that मुझे it stimulates me या mentally. सो तो वो बहुत नंबर्स मिले इस important है. डिग्री में. सो Definitely बहुत ओके मिले. ओके ओके Very happy. okay, so what did you Never. like about this degree the most, like, and कैसे वो different थी? Because now what I want you to address is कि क्या अच्छा लगा, and how the degree was different from an Indian experience, which, like you said, you didn't like at all. But क्या I difference था didn't. इंडिया के experience से, and like क्या अच्छा लगा इस डिग्री में? Okay. पहले चीज तो flexibility. हम्म. Flexibility, flexibility, flexibility. I have literally written 3 flexibility, मतलब 3 बार मैंने शब्द लिखे हैं on my pointers. I'm going to refer to my notes now. ठीक है. मतलब यही है ना कि इंडिया में यू गेट इनटू अ डिग्री, फिर आपको वो इलेक्टिव्स लेने का वो सारे ऑप्शन नहीं होते. दैट Yes. इज वन थिंग दैट आई रियली लाइक. I think maybe mass comm में नहीं होता होगा, but there are universities like I think bachelors में बीटेक में हमारे में elective का option होता है. You get that अच्छा, option. हाँ हाँ. हमको तो एट सम पॉइंट दिया था उन्होंने एंड में, okay. लाइक फॉर एग्जांपल वी हैड आवर फाइनल प्रोजेक्ट और व्हाटएवर, बट देन स्टिल दैट वो फ्लेक्सिबिलिटी वाला फैक्टर मुझे मिसिंग लगता है. Yes, I agree with on that point you of flexibility. I know what you are saying कि आप कोई सब्जेक्ट पहले में कर लो, दूसरे में ट्राइमेस्टर में कर लो, तीसरे में, इन टर्म्स वो हाँ, भी फ्लेक्सिबिलिटी. इंडिया में एक पैटर्न है भाई, एब्सोल्युटली. यही ऐसे ही जाना है. ये है, ऐसे ही जाना है तुम्हें.
Yes. अगर एक सब्जेक्ट में लुढ़के तुम तो गया उसको रिपीट करो वापस। Yeah. यहाँ पे वो नहीं है। इफ यू फ्लंक वन, मतलब थैंकफुली आई हैवंट, मतलब टच वुड मैंने एक भी सब्जेक्ट यहाँ पे फ्लंक नहीं करा मैंने भी नहीं करा। है। बैचलर में हुआ, देख यहाँ खा, भी हुआ। ना ना दोनों में नहीं हुआ। मेरा तो बैचलर में बच हुआ गए, था। बाल बाल बच गए। मैं तो यार तो ड्राइंग के सब्जेक्ट में फेल हुआ था। अगेन। यू वोंट बिलीव, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। मैं 11th और 12th में आई यूज्ड टू फ्लंक इन मैथ्स ओह, यूनिट टेस्ट में। वहां से प्यार चालू हुआ मैथ्स का। बहुत टू मच प्यार। You conquered your ठीक fear, है। your failure, to be honest. Yeah, वेल, yeah. तो डिफरेंस, हाँ, दैट इज वन थिंग। प्लस द वे यहाँ पे इंडिया में देखे, जैसे मतलब मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो असेसमेंट्स किए हैं, यस दे वेर इंडस्ट्री बेस्ड और वट एवर, Mm-hmm. बट यहाँ के असेसमेंट्स मुझे ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड लगे। Okay. वहां पे वो चीज नहीं थी। यस वी हैड सब्जेक्ट्स लाइक टेलीविजन प्रोडक्शन जहाँ पे हमको शूट्स करने पड़ते थे, वेरी रियलिस्टिक वट एवर, बट देन जो बाकी थियरी बेस्ड सब्जेक्ट्स जो थे, उनके असेसमेंट्स, उनके एग्जाम्स जैसे होते थे, वो पार्ट वो यहाँ पे कंपेयर करो तो बहुत अलग Yes, है। I agree on that एंड आई point. क्वाइट, अब यहाँ पे असेसमेंट करने के लिए वेदर यू लाइक द सब्जेक्ट, वेदर यू डिसलाइक इट, यू हैव टू डू योर रिसर्च। आप कुछ भी करके सबमिट नहीं कर सकते। वो and उससे learning उससे याद रहता है. बहुत याद रहता है। Yes. आई एम, मतलब मुझे वैसे भी मे बी इट्स प्रोबेबली बिकॉज थोड़ा रिसर्च वाला Yeah. बेंट ऑफ Research माइंड work है बहुत मेरा। ज्यादा. Hmm. मतलब क्रेडिट काफी ज्यादा यूनिवर्सिटी को भी जाती है। They teach you how to do a lot of stuff. 100%. Would you Yeah. believe if I told you I didn't know how to do referencing mark 804 के first assessment में? She gave me a, I think 50 में से उन्होंने मुझे 18 मार्क्स दिए थे। I think no one knew, to be honest, referencing. मेरे लिए भी बहुत नया था referencing कैसे करते हैं कैसे नहीं. Uh, ठीक है। it was a disaster. But you learn something और from that also, like you absolutely, start giving credit to people. इंडिया में हमें छापने की आदत होती है, एंड यहाँ पे वो छापने भी वाले को क्रेडिट देने की आदत दिलाते हैं लोग. बहुत डिफरेंस है, absolutely, मतलब बहुत डिफरेंस है. इफ यू जस्ट थिंक हाउ डीप दिस इज, कि छापना एंड छापने वाले को क्रेडिट देना. actually, एंड actually, and छाप भी नहीं I'm सकते, very, राइट? लर्निंग, no, उससे समझना, जिससे छाप रहे हो उसे क्रेडिट देना, प्लस उससे समझना उसने बोला क्या, एंड देन टेलिंग दैट इन योर ओन वर्ड्स. yeah, दैट that इज is वही तो वेरी learning ब्यूटीफुल. होता वही है। लर्निंग है. That is how things enter into your system. यस. वरना आप लर्निंग लर्निंग क्या कर रहे हो, दैट या. इज, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। यस. एंड यू गेट एक्सेस टू, हाँ वहां पे भी वी हैड एक्सेस टू रिसोर्सेस एंड व्हाट नॉट, रिसर्च पेपर्स, बट यहाँ पे जैसे यू हैव योर लाइब्रेरी में ही अपने डेटाबेसेस के एक्सेस होते हैं, या. एंड यू गेट एक्सेस टू रिफिनिटिव एंड योर, क्या उसको बोलते हैं, आई थिंक ब्लूमबर्ग का एक्सेस नहीं था हम लोग के पास शायद से, आई डोंट नहीं, रिमेम्बर। ब्लूमबर्ग का नहीं था. ब्लूमबर्ग का नहीं था। वी हैड आई थिंक आईबिस ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड इंडस्ट्री एंड का अदर मोस्टली स्टफ, था, हाँ, ऑस्ट्रेलिया का. एबिस वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ दैट। मुझे वो चीज बहुत अच्छा लगा। और एक और चीज है कि यू आर योर ओन पर्सन, नोबडी इज गोइंग टू बी आफ्टर यू। कोई यस. स्पून फीड नहीं करने वाला। वही. तुम नहीं करोगे तो तुम भुगतोगे। हाँ, करना पड़ेगा. टाइम मांग लो, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, बट एक्स्ट्रा यू हैव टाइम टू मिल डू इट. जाएगा। यू यू हैव हैव टू टू डू इट डू योर ओन ऑन स्टफ, योर यू ओन. हैव टू बी एन एडल्ट। एंड नो वन यहाँ पे कोई छापने के लिए अपना असाइनमेंट देता भी नहीं, क्योंकि एवरीवन इज स्केयर्ड कि तुम कॉपी कर लोगे एंड वो प्लेजरिज्म आ जाएगा. सो यू आर ऑन योर ओन ओनली. वो समझ आ जाता है एक्चुअली, बहुत अर्ली ऑन दैट नो वन इज हियर फॉर यू, यू आर फॉर योर आंसर. हाँ, लाइक रेफरेंस मतलब रेफर करने के लिए कि हाँ, कभी कभी ना असाइनमेंट. समझ में नहीं आता है कि यस. व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। हाँ. तो हाँ, रेफर करने के लिए तो मैंने भी लिए हैं, बट इसका बट यू मतलब कांट ये नहीं है कॉपी कि दैट, मतलब राइट? यू वो भी कैन नॉट समझना पड़ेगा, डीपली स्टडी करना पड़ेगा. बिकॉज एक्चुअली। इंडिया में तो आंख बंद करके बस कॉपी पेस्ट. यहाँ पे यू रियली हैव टू रिव्यू. मेरे ख्याल से रिव्यू इज द राइट वर्ड. यू हैव टू रिव्यू देयर असाइनमेंट. टू बी ऑनेस्ट, हम्म, रिव्यू का मतलब ही रिव्यू होता है कि आप रिव्यू करते हो, पढ़ते हो, एंड देन यू एक्चुअली स्टार्ट योर ओन प्रोसेस. सो या, हम्म, दैट इज, आई थिंक, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑन दैट.
तो आई मीन पीपल, हाँ असेसमेंट्स वाले टाइम स्ट्रेसफुल होते हैं ऑब्वियसली, बट आई रियली यूज टू लाइक दोस, वो रिपोर्ट लिखना, यस वो सब करना, मुझे रिसर्च करना, पहले रिसर्च पेपर्स कलेक्ट करना, उसमें से डेटा निकालना, उसको कंपाइल करना, आई रियली एंजॉयड दैट प्रोसेस. ओके नाइस and because I think a lot of collaboration also happens and like a Yes. lot of group assignments are there. Well, हम Indians ही इतने ज़्यादा होते हैं मेरे साथ तो ये है mostly I'm working with Indians, but how that cultural adaptation process works, like a completely different culture and यहाँ पे there are Australians, there are people from China, there are people from Vietnam and Middle East and like other countries. Yeah. So how that cultural adaptation works, like वो कैसा फील था? Did you find it difficult? Because sometimes language barriers भी आते हैं. Sometimes their ways of working and our Indians ways of working is completely different. So how did you Yeah. cope up on that? Like वो कैसे work out करा उस चीज से? आई थिंक मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई इस चीज से, Mhm. बिकॉज मतलब हम लोग को ना क्या टेंडेंसी होती है, वी स्टिक टू पीपल फ्रॉम आवर ओन कम्युनिटी, वी कम टू अ फॉरेन कंट्री, Yes. let me put that in quotations, we come Yes. to a foreign country, we get out of our zone, we come to a foreign country, and we stick to our own people. Yeah. Why on earth am I coming to a foreign country? Yeah, I don't know and like because I think इस ये हर कोई एक को बात बोलता है कि देसी देसी का काटता है. This is the common theme that I have heard Absolutely. from everyone, but still I feel that we just stuck to our own desis only. But I feel we are missing on something by not Yeah, see, exploring other culture. yeah, see, it is, matlab, it is very natural to find comfort Comfort. in our own community in the Yes, beginning. yes, But then slowly now we have to diversify our own circle. absolutely. Because back in your country, you were with your own people. Yes, I mean, people like your own self, basically. But यहाँ पे आने का point मिस हो जाता है if we do not diversify our circle. yes. And I think university वो जबरदस्ती करवाता है, which is a good thing. करवाता है, which is I Which is a agree with good you. thing. बहुत बहुत They ज्यादा put जरूरी है. you, वो जो group work करते हैं हम लोग, करते थे हम लोग in the past. Yes, तो उससे हाँ उतनी उतनी बातें नहीं होती थी, but you sort of start सोसाइटी के getting into that zone. सोसाइटी के स्टिग्मा से भी बाहर आते हो. एक जो जनरल परसेप्शन होता है सोसाइटी का रिगार्डिंग कंट्रीज एंड रिगार्डिंग पीपल फ्रॉम दैट, वो भी बदलता है, आपका नजरिया बदलता है, राइट? I don't think so. सेम रहता है. I don't think, ओके. मोस्टली मतलब अपने हिसाब से तो मैं नहीं बोलूंगी, हम्म. बट वी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टीरियोटाइप्स इतने हमारे अंदर भरे हुए होते हैं, भरे वी हुए हैं. फॉरगेट दैट ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर ऑल. यस. वो आपको बुरे लोग, अच्छे लोग, वॉट एवर डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शंस के लोग, आपको हर कंट्री में एवरी स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू हैव दैट वैसे टाइप के people बिकॉज that cannot be avoided. यस यस यस. एकदम एकदम ऑन पॉइंट बात है वाली. एंड आई थिंक वी शुड नॉट फॉरगेट दैट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस एंड वी शुड एक्सप्लोर एंड रिस्पेक्ट एवरीवन, उनके कल्चर को, एंड गेट टू नो, like it's also some sort of learning, right, where you Mm. get to know about different countries, their people, their culture, and it's an experience. You learn so much, so don't miss out on that. But हाँ, comfort जो होता है ना, वो जो वो comfort है वो कंफर्ट अपनों में ही शुरुआत आता है. में अपनों में ही आता है. शुरुआत में ना जरूरत होती है उस चीज की. Yes, it is very much तो needed. But again, still उस balloon से बाहर भी निकलना जरूरी है, because in the corporate world you get to work with people from different cultures. So अगर उस एब्सोल्युटली. balloon में रह जाओगे तो I think it gets difficult to engage with people in the corporate हम्म. world. And sometimes I think people forget that the relation that you make in the college, um, आगे जाके that person can be working on some other यस. company, right? यस. Networking. नेटवर्किंग जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सपेक्ट लाइक एरिया है जो हर कोई बोलता है. नेटवर्किंग इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द कॉलेज, एंड यप. जिसको हम अपने सर्कल को खुद छोटा करते हैं बाय जस्ट टेकिंग टू डीसीज एंड नॉट एक्सपैंडिंग देम. पीपल फॉरगेट दैट people from different nations, different countries, they are working at the top positions in the companies. आज जो जहाँ है कल कहाँ होगा किसी को नहीं पता. So ना.
we should not miss out. So how Never. is your network like? Did you make मतलब in your degree because I think entrepreneurship एक बहुत ही मतलब again and you need to explain this to the audience as well as to me कि entrepreneurship journey sorry ये जो डिग्री है इसमें कितने लोग बच्चे थे एंड कितने कंट्री से बच्चे आ रहे थे एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिक फील्ड बिकॉज मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि entrepreneurship by the name is startup related right you do something in Yeah. the startup but how the career progression works कि जॉब्स किस फील्ड में मिलती है बिकॉज एज अ स्टडी इट्स लाइक अबाउट स्टार्टिंग अप लाइक entrepreneurship जर्नी कैसी होती है आई डोंट नो आई एम जस्ट ब्लैबरिंग अबाउट दिस बट ये डिग्री है क्या ये किसे करनी चाहिए how the networking works in this particular degree and आगे future prospective job options क्या होते हैं once you do this degree Okay. I'm glad you asked that. yeah. Because मैं कभी कभी सोचती हूँ, yes, this degree acted as a pathway and I could justify on my SOP कि मुझे ये क्यों करना है. But then also feel that this degree should have come at a later point in my life. hmm. Makes sense ठीक है, ये थोड़े देर में आता कुछ सालों बाद तो ज्यादा मेक सेंस करता मुझे, ज्यादा बेनिफिट करता because ज्यादा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेनिफिट होती करता. या बिकॉज यहाँ पे जिन बच्चों ने पढ़ाई की है मेरे साथ, अदर स्टूडेंट्स बेसिकली, a lot of them मतलब वो they were already मतलब they had their own startups, they were up and running. okay I was the only बच्चा वहाँ okay पे. ठीक है, मतलब ओनली बच्चा तो नहीं बोलूंगी, हाँ, बट बिना एक्सपीरियंस के entrepreneurship डिग्री लेना, हाँ मैंने लिया, आई लाइक्ड इट व्हाटएवर, but it would have made a lot of sense, lot more sense, had it come at a much later stage in life, later उनका या when you have experience in my career. Yes. okay makes sense but good part is you made so many like connections with the people who already have a startups and working in industry Oh yeah. Not exactly, I wouldn't say. मैं उस जोन में ही नहीं थी. ये नेटवर्किंग वाला चीज मेरे दिमाग में बहुत लेटर स्टेज पे आया, yeah and no बहुत देर and से I घुसा think है. हम उस सेम पेज पे हम सबके बहुत लेट आते हैं हम बहुत अपने शेल में ठीक है. चले जाते हैं ना नई कंट्री में बहुत ज्यादा शेल में चले जाते हैं हाँ, प्लस इंट्रोवर्ट नेचर भी होता है no, no, I'm not introverted per se. हम्म, आई एम वेरी okay चैटी, okay मतलब मेरा चलता ही रहता है, चलता है तो हाँ, बंद नहीं होता है, मुंह नहीं बंद रहता है. ठीक है. तो वो चीज नहीं है, बट when you see, मतलब उस environment में when you see a lot of people coming with a lot of experience and they're speaking ना, एक तो you tend to मतलब थोड़ा कीप करके, हाँ ये क्या बोल रहा है मैं सुन लेती हूँ, हम्म, लेट मी एब्जॉर्ब. तो उस चीज में आप थोड़े यू मतलब गेट ऑन द बैक बेंच. वो चीज हुई थोड़ी मेरे साथ. फिर सॉरी, व्हाट वाज द अदर थिंग दैट यू आस्क्ड? हाँ नहीं अदर थिंग वाज वो मैं नेटवर्क की बात कर रहा था कि करा कि नहीं करा बट आई थिंक यू मेड दैट बहुत ज्यादा मैंने मेड ऑनेस्टली नहीं करा. I'll be honest there. बट एनी Maybe I रिग्रेट should have, कि but करना नहीं, चाहिए not ओके at all, not at all. बट लोगों को करना चाहिए राइट पीपल शुड डू दैट डेफिनेटली करना चाहिए. हाँ, आई वाज टॉकिंग अबाउट सर्कमस्टांसेस, बिकॉज आप नए नए जब आए हुए होते हो, यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट इन अ न्यू प्लेस, तो आपका your head also should function यस in a way, okay, because sometimes all you're doing here is surviving, let's यप be honest. यप एग्रीड एंड मैं सर्वाइवल मोड में रही हूँ बहुत बहुत टाइम तक. यप तो मे बी दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स. मैं सोच ही नहीं रही थी नेटवर्किंग के बारे में उस टाइम. Yeah, because I think your life is so busy. You're trying to manage your studies, part-time work, weekly expenses, rent वो and all सब, that. हाँ, उसमें आप वो बहुत सब ज़्यादा बिजी हो एग्जैक्टली. जाते हैं बाकी चीज़ों का आपके पास टाइम हाँ. ही नहीं होता है मैं एग्री हाँ you need to be very super super active less sleep वो हमेशा insomnia नहीं होता है. and बस सब चीज़ें करना इंसोम्निया पता नहीं क्या क्या आता रहता है यार. yeah so so if I'm correct this degree is something which I think ये उनको करनी चाहिए जिनको इस entrepreneurship वाली जर्नी में जाना है या उनके पास जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है या ऑलरेडी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कर लिया है बिगिनर्स हाँ, के लिए थोड़ा थोड़ा
मतलब थोड़ा इट ओवरवेलमिंग हो वाज सकता है, ओवरवेलमिंग था मेरे ओवरवेलमिंग मेरे हो हिसाब से सकता है. तो थोड़ा ओवरवेलमिंग था. Yes, so I think because you don't have any experience as well, right? हाँ, ज्यादा तो. बिकॉज दैट टॉक अ लॉट अबाउट लीडरशिप एंड ऑल दैट Yes, स्टफ. yes. वहां पे आप सोचते हो कि भैया ये तो मैं, मतलब मेरे दिमाग में लाइक मैं तो थियोरेटिकल बैकग्राउंड से आई हूँ, मुझे थियरी वापस Mm, नहीं पढ़ना था. yeah, 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 makes व्हाट एम sense. आई गेटिंग? वो चीज आपको मेक सेंस करेगा ओनली व्हेन यू आर एट सच अ पोजीशन. Yes, agreed. एंड जो तो नया वो नया चीज आता है उसके लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है कि यार डेफिनेटली. ये सामने वाला इतने एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है, एंड देन दे टॉक हाँ. दोस थिंग्स बिकॉज दे आर टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, एंड या देन यू फील यार मेरे को तो एंड समझ यू ही नहीं हैव, आ रहा हाँ, ये you क्या have बोल रहे nothing to say. There are times when you're like, you have nothing to say. What am हैं. I doing here? Yeah, yes, you start questioning You feel everything. like an outlier, basically. Yes, yeah, yeah, agreed. So, which degree helped you more? Like going through your future career perspective, like Def jobs and all that, entrepreneurship or finance? Because Definitely finance my is a financial minor management degree. degree. Oh, nice. Because Definitely. I would, मतलब लोगों को आइडिया नहीं होगा, but आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट फाइनेंस मैनेजमेंट जो होती है वो सेकंड डिग्री को कंसीडर करते हैं ड्यूअल मास्टर्स, Hmm. बट वो It's a minor. दो ट्राइमेस्टर के लिए होती है, राइट? 4 ट्राइमेस्टर्स यू स्टडी योर मेन डिग्री, हाँ, हाँ. दो बेसिक सब्जेक्ट ट्राइमेस्टर सेम बिकॉज होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं 6 सब्जेक्ट्स इन द वो कोर कोर एंड थ्री हो जाते हैं. सब्जेक्ट्स ईच ट्राइमेस्टर. बट या दैट सो जस्ट गिव्स यू दैट फीलिंग दैट दो ट्राइमेस्टर बहुत जल्दी खत्म हो गया, बहुत जल्दी फास्ट पेस हो गया कि क्या आके खत्म हो गया एकदम से, बिकॉज इट्स अ ट्राइमेस्टर सिस्टम, 3 महीना 10 दिन का ब्रेक, अगेन तीन फिनिश. महीना एंड डिग्री फिनिश ओवर. सो आई थिंक यू आर सेइंग दैट फाइनेंस मैनेजमेंट ने ज्यादा हेल्प करा. डेफिनेटली. एंड आई मीन इट्स नॉट अ रिग्रेट पर से, बट हाँ, कभी कभी लगता है कि ये मेरा पहले मेन डिग्री मैं होता आने तो वाला था बहुत इस क्वेश्चन बढ़िया में, रहता. बट यू आंसर दैट कि कोई रिग्रेट है कि पहली डिग्री वो ली थी, But बट वो but there was no way I could have gotten into it. या या Let's be honest, ओके. you know. तो जितना, मतलब मैं अभी कुछ भी, कितनी भी सोच लूं मैं, वो उस टाइम पे सिचुएशन ही अलग था. शी वाज लाइक, नहीं तुम्हारा ये लोग जीटी इतनी जल्दी अप्रूव नहीं करते हैं. I would suggest you get into something which is या closely related. या So you take that. Thankfully, I didn't take something like international business. That या wouldn't have made all the more sense. या ओके. So, when did you graduate? Which month? I finished अभी अगस्त एंड में Oh, this 2023. August अभी 2023. Oh, nice. So August 2023, you graduated from financial management, yes. and now talking about currently you are working, if I'm correct, currently you are working at NAB, Yes. one of the biggest banks in Australia, known for its work culture, Absolutely. known for its Yep. amazing work culture. So you started at NAB this month? Yeah. 2 हफ्ते खत्म हुए मेरे अभी. Oh, nice. 2 Congratulations. हफ्ते की ट्रेनिंग खत्म. Thank you. So August May you finished your masters. So Hmm. let's leave August. So September, October, and November you started. So वो Yeah. 2 months का period कैसे था? Where were you applying? What was the journey like? And कैसे degree ने help करा to land your job at NAB? And also explain like what is your role like, what position you're working, and Okay. yeah. So 2 महीने का पीरियड. It was very unexpected, to be honest. मुझे एक भी इंटरव्यू नहीं आ रहा था. You'll be surprised to hear मैंने सिर्फ 2 ही इंटरव्यू दिए हैं. Only 2. Because मुझे इंटरव्यू ही नहीं आ रहे थे. But success rate of 50%. That's what matters, right? कि 2 ही दिए और एक निकाल दिया. बस thankfully I was मतलब fortunate, I would say. Mhm. यहाँ पे डिग्री didn't play a role. I'll Okay. tell you, I'll come to why. इससे पहले my previous, my ex flatmate, she was working for a concession footwear brand in the David Jones flagship store in Sydney. Okay. The main store, ठीक है. Mhm. उसने मुझे अंदर डलवाया उस स्टोर में. into DJs. Yes. Okay. तो 1 साल का कस्टमर सर्विस, डायरेक्ट कस्टमर, मतलब फेस टू फेस Experience. एक्सपीरियंस. Hmm. ठीक है. और डेविड जोन्स का टैग लगना, मतलब ऑब्वियसली डेविड जोन्स का Yes. टैग नहीं लगा. आई वाज नॉट अ डायरेक्ट डेविड जोन्स एम्प्लॉय पर से, बट
the fact that I'm sure it would have made some impact. थोड़ा तो significant रहा होगा to see that मतलब CV में resume में ये देख के कि हाँ डेविड जोन्स फ्लैगशिप स्टोर में किया है इसमें. So that is one thing. That is how I gained my customer service experience. Coming to my applications, I knew for a fact कि मुझे core finance role में नहीं मिलने वाला है. Yeah, इस डिग्री से नहीं मिलता है because इस डिग्री से क्या मुझे because experience plays a very very big important role crucial here, role, right? and I cannot stress enough on that. For an entry level role, इनको 2 साल का experience It's चाहिए written होता है. 0 to 2 years of experience, and I don't know why they call it Not entry level. not even 0 to 2. I have seen 2 to 4. 3 years of Yeah, I've experience. seen They that as expect well, you to right? have 10 Yeah. years of learning and wisdom within 2 to 3 years of experience for an entry level role. I think that's very unfair.